Totally right, sister. You're totally right. You should give the message of Allah, that is the Quran, and the message of the Prophet mentioned in the Hadith. But giving the translation of the Quran is very good. But as you have heard in my talk, the master key for dawah is Surah Imran, chapter 3, verse 64. Allah says, "Ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Come to common terms as with us and you. Which is the first term, Allah na'budu illallah. That we worship none but Allah. When you are speaking to your family if they are Christian, to break the ice, as you may have heard in my talks, you should say Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today do not believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. The Christians and the Muslims are going together. That is parting of faith. The parting of faith is that many Christians think that Jesus Christ, peace be upon him, claimed divinity. And they think that Jesus Christ, peace be upon him, is God. So you have to tell your family members that there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always says worship me. And you can throw a challenge, or you can say there is a lunatic person, joker-looking person wearing a suit and a cap, trousers above the ankle. He is saying that there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always says worship me. If any Christian can show me a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always says worship me, I am ready to accept Christianity. Can I say something, if you don't mind? Sure. So, with your teachings, Alhamdulillah Rabbil Alameen, I've been given dawah through the world, traveling over, and subhanAllah, Allah subhanahu wa ta'ala shows me I didn't expect this would happen to me, that so many non-Muslims accepted Islam after your messages from the Quran and the Sunnah. I'm thankful and grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that I could, send this message forward of you. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa alaikum assalam. But sister, you have to continue doing dawah with your family members. Yes. If they don't, Allah says in the Quran, in Surah Ghashiyah, chapter 88, verse number 19 to 22, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. Your job is to deliver the message. Hidayah is in the hands of Allah. So if you are successful with so many people, 20, 30, 40, 50, 100, I don't know. But if your family members aren't accepting, it is not in your hand. Our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he gave the message to his beloved uncle, Abu Talib, and it was his desire he accepted Islam. Even on his deathbed he did not. Yes. So when Prophet Muhammad did not do that, who are you and me? Nothing. Yes. So this proves that Hidayah is in the hands of Allah. Allah. And who is a better Dai than our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. We are not even 0.0001%. When Prophet could not convince And who are the we? person who protected the Prophet, it was because of his uncle Abu Talib, the father of Hazrat Ali, may Allah be pleased with him. He protected him. Why? Because of the culture, tribe. My nephew, anyone touches, I will stand there. He protected him with life, with wealth. Allah didn't give him hidayah. Prophet wanted. When this verse was revealed, that it is Allah who will give hidayah, the person who laughed the most was Hazrat Bilal. Hazrat Bilal laughed a lot. Why are you laughing? If hidayah was in the hands of somebody else, me, a black slave, would have been last. Hazrat Bilal, he was amongst one of the few first people to accept Islam. So hidayah is in the hands of Allah. But whatever dawah you do with your family, inshallah you will get reward. You may get more reward even than making someone else a Muslim. So you continue, sister.
Allah will be with you, irrespective they agree or not, you keep on continuing. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He give you that, the technique or that ability to make people accept Islam, and may I pray to Allah that may He give hidayah to your family members. Hope that answers the question. جزاک اللہ خیر. کوئی اور غیر مسلم ہمارا بھائی یا بہن اگر موجود ہے تو ان کو پہلے سوال کا موقع دیا جائے گا, اور اگر وہ نہیں ہے موجود تو یہ میرے سامنے جو بھائی کھڑے ہوئے ہیں یہ میں ان سے درخواست کروں گا یہ سوال کریں. جی اگر کوئی نان مسلم ہے تو بتائیے ہاتھ کھڑا کر کے. جی کس سائڈ کے اوپر؟ جی مائک کے قریب آ جائیں پلیز. السلام علیکم. نان مسلم بھائی اگر ہیں کوئی ہمارا. راول جنرل سیکرٹری میری کاسٹ بھیل دراوڑ قبیلے سے وابستہ ہوں. میں عمر کوٹ میں رہنے والا ہوں. حاجی علی مراد راجہ ایم پی ہے اس کے گاؤں میں. تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں. 72 فرقوں میں جب کوئی ہندو مسلمان بنتا ہے تو اس کو کون سا فرقہ دیا جائے گا, کون سا فرقہ پہنایا جائے گا؟ زیادہ تھوڑی سوالات میں غلطی ہے تو معذرت. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے, بہت اہم سوال پوچھا. اس نے کہا کہ اگر میں نے صحیح سنا, میں ڈھونڈ رہا تھا کدھر ہے, پتا چلا کہ 12 دن میں. اگر میں صحیح سنا انہوں نے کہا کہ اسلام میں 72 فرقے ہیں, اور اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں داخل ہوں گے. بھائی صاحب اسلام میں 72 فرقے نہیں ہیں. یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ اسلام میں 72 فرقے, قرآن میں بھی نہیں لکھا ہے, حدیث میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان 72 فرقے میں بٹیں گے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ فرقے. قرآن مجید میں لکھا ہے فرقہ بنانا حرام ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158-159 159. ہاں لکھا ہے کہ جو بھی فرقے بنائیں گا یہ رسول تجھ کو اس سے لینا دینا کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ اسے دیکھیں گا. قرآن کی کئی آیتیں فرقے بنانا حرام ہے. اس کے باوجود ترمذی کی صحیح حدیث ہے, حدیث نمبر 171, جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان جس طریقے سے عیسائی نے یا یہودی نے 71 فرقے بنائے, عیسائی نے 72 بنائے, مسلمان 73 بنائیں گے. 73 not 72, 73 73. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان بنائیں گے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ. آپ سمجھ رہے, قرآن میں صاف کہا گیا ہے فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. تو فرقے بنانا حرام ہے اسلام میں, لیکن پھر بھی بنائیں گے. آپ کا سوال ہے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں جائیں گا؟ وہ مسلمان بنے گا. قرآن کی کئی آیتیں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہو کہ میں مسلم ہوں. قرآن میں کہاں نہیں لکھی کہ باقی کچھ کہو. تو اسلام ایک ہی مذہب ہے. اگر کوئی غیر مسلم اپنی مذہب کو تبدیل کرے گا, ہم کہیں گے اسے اسلام میں داخل ہو. اپنے آپ کو کیا بولو؟ مسلمان, مسلم, فل سٹاپ. اگر کوئی شخص ندوہ سے پڑھا اپنے آپ کو ندوی بولتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. کوئی دیوبند سے پڑھا دیوبندی بولتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. مدینہ سے پڑھا مدینی بولتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن دینی لقب سے مسلم, پھر مسلم. ہم مسلمان ایک ساتھ ہونا چاہیے, دنیا بھر میں بٹے ہوئے, چاہے پاکستان ہو, چاہے ہندوستان ہو, کوئی بھی استان ہو. ہم مسلمان آپس میں کیوں جھگڑے؟
जैसे कि मैंने कहा कल और पहले भी, ये जो चारों अइम्मा हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, हम चारों की इज्जत करते। चारों बड़े बड़े उलमा थे, कई अइम्मा थे, पर ये चारों के जो तुलबा थे उन्होंने और फिनिश किया। ये चारों अइम्मा माशाअल्लाह अपने जहन से हमें दीन समझाने लगे। और मेरे नजदीक जब मैं ये चारों अइम्मा की किताबें पढ़ा हूँ और उलमा के साथ मैं स्टडी किया हूँ, मेरे वालिद शाफी थे, मैं रत्नागिरी से हूँ, बॉम्बे में पैदाइश है, तो बचपन में शाफी पढ़ाने आते थे मैं। बट मेरे वालिद माशाअल्लाह बहुत खुले जहन के थे, वो सारे उलमा से बहुत करीब थे और घर पे एवरी सेकंड डे उलमा आते थे, हनफी आते थे, शाफी आते थे, अहले हदीस आते थे माशाअल्लाह। मुझे याद है कि बचपन में मैं मुजाहिदुल कासमी, काजी मुजाहिदुल कासमी हनफी फिक्र के बड़े फकीह है, इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस नसीब फरमाए। तो पहली बार जो सीखा मैं हनफी मजहब के बारे में वो थे काजी मुजाहिदुल कासमी के साथ, फिर अली मियां नदवी के साथ घर पे आते थे, मैं उनको मिलने जाता था जब वो मुंबई आते थे। भाई मौलाना पारेख है, ये सब लोग से ताल्लुक थे। फिर मुख्तार नदवी साहब अहले हदीस के अमीर, मेरे वालिद साहब जितने अमीर है सब लोग को माशाअल्लाह क्या घर पे आते थे, हम उनको मिलने जाते थे। और मैं तो बच्चा था पहले, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का हुआ, और मैं इनसे सीखता था। मैं कोई मदरसा नहीं गया, लेकिन बड़े बड़े उलमा के साथ में बैठा और दीन सीखा। फिर सऊदी अरेबिया गया, शेख अब्दुल अजीज कुरैशी, शेख सालिम मुनज्जिद, उनका मयार कुछ अलग है। शेख ददू मालिकी स्कॉलर है, दुनिया में आज लोग कहते नंबर 1 पे, 1 पे का 2 पे, लेकिन टॉप 5 में तो है ये सब लोग। उनसे बैठे, उनके साथ सीखे, जहन खुला। सबसे पहली बार जब मैं अरबी सीखने गया था, अरबी में महारत मुझे नहीं है, डॉक्टर फाफ दरही इंडिया से है, लेकिन उनने एक नया शुरू किया था मदीना यूनिवर्सिटी में गैर अरब को अरब सिखाने के लिए। तो सबसे पहले उस्ताद जो मेरे बाहर के थे वो डॉक्टर फाफ दरीम थे, और वो कहते थे कुरान में कितने बार भी पढ़ो, कहाँ लिखा ने अपने आप को हनीफी बोलो, शाफी बोलो, देवबंदी बोलो, मदनी बोलो या सल्फी बोलो, कुरान में निकला है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और देखे जाओ तो 95% सेम है, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई कहता हाथ ऊपर रखना अफजल है, कोई कहता नीचे करना। मैं तहकीक करता हूँ, तहकीक करने के बाद मैं बहुत सख्त हूँ फॉलो करने के लिए, लेकिन तहकीक करने के बाद मैं जो कहता हूँ कि मैं भी सही हूँ, ये आम लोग बोलते मैं ही सही हूँ, ये प्रॉब्लम है। मैं ही सही हूँ, आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। इस्लाम में माशाअल्लाह इतना वाइड स्कोप है, छोटे छोटे बात पे इख्तिलाफ पे रफादन करना चाहिए कि नहीं, हाथ का मानना, तो इस पे झगड़े होते, डिबेट होते। और चारों अइम्मा ये मानते हैं अगर आप कोई दूसरे अइम्मा पे अमल करते तो कोई गुनाह नहीं है। मैं भी उसको मानता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एडवांटेज दिया है कि मैं मुख्तलिफ अइम्मा, मालकी तो यही नहीं है, मलकिया, शेख मोहम्मद हसन दद्दू नाम सुना ही नहीं होगा, कौन सुना शेख मोहम्मद हसन दद्दू का नाम? एक भी हाथ में, हाँ एक दो हाथ हो गए। शेख मोहम्मद हसन दद्दू मोरटानिया के है, मेरे बहुत करीब है, और आज की तारीख में लोग कहते हैं वो सबसे बेस्ट आलिम है, बट बेस्ट नहीं, टॉप 5 में तो आएंगे। हदीस की नॉलेज, कुरान की नमाल की है, वो सी कौन से अभी कतर में रहते, कतर ने सिटीजनशिप दे दी उनको, मोरटानिया के शेख अब्दुल अजीज कुरैशी, तफसीर में महारत है उनकी माशाअल्लाह। वो मुझे बोला है, बोला कोई तफसीर मैं भी नहीं जानता था, मैं बिजी था, मैं बोला बहुत बिजी हूँ मैं। मॉर्निंग में एक जन ने कहा मोहम्मद अल अरीफी,
मोहम्मद अरीफी का नाम सुने आप? मोहम्मद अल अरीफी अरब वर्ल्ड में बहुत फेमस है। मैं बोला बहुत बिजी हूँ, मैं मॉर्निंग में आ सकता हूँ। अच्छा 7 बजे आओ ब्रेकफास्ट के लिए। 7 बजे गया। शेख अब्दुल अजीज कुरैशी बोले कभी भी आएंगे चलेगा। मैं बोला अच्छा मैं आता हूँ 12 बजे। 12 बजे गया, 4 बजे तक ये था। मुझे पता नहीं कौन थे शख्स, बाद में पता चला इतने आलिम मेरे से यंग है। उनका इल्म, वो कहने लगे मेरे कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट थे, आपकी इतनी तारीफ की है, फिर मैं आपका तर्जुमा देखा वीडियो पे और मेरी ख्वाहिश है आपसे मिलने की। मैं उनके इल्म के हिसाब से 0.0001% भी नहीं हूँ। ये उल्मा है। शेख अब्दुल अजीज कुरैशी, शेख सालेह मुनज्जिद, इस्लाम Q&A, इस्लाम Q&A सुने .info, सबसे फेमस वेबसाइट फतवे के बारे में। वो फतवा भी देंगे तो बोलेंगे अबू हनीफा ने ये कहा, इमाम शाफी ने ये कहा, अच्छा ये चीज अफजल है। ये तरीका है आपस में झगड़ने का थोड़ी। तो वो लोग को देखो इतने बड़े बड़े आलिम कभी भी नहीं कहते भाई आप हनीफी है, अगर पढ़ते नफरत नहीं करते नो प्रॉब्लम। वो कहीं ठीक हमारे नजदीक ये अफजल है। ये इख्तिलाफ क्यों है? इख्तिलाफ है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फिक्र। अभी कोई फॉलो करेगा एलोपैथी, कोई फॉलो करेगा यूनानी, ये 95% सेम है। और जो इख्तिलाफ भी है वो छोटी छोटी बातें, फरूरी बातें, उसके ऊपर झगड़ने की जरूरत क्या है? मैं तो सारे उलमा से मिलता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इल्म हासिल करता हूँ।